A warm good Hello. morning to all of you. A warm good morning to all. Good morning to all of you. I, Dr. Meha, I, Dr. Meha Sanghi, Assistant Professor in TIT, I heartily welcome to all of you in this today's webinar, How to Improve English Using Free Resources. I would like to invite and welcome our management, our principal madam, our keynote speaker, and our TIC colleagues, and not our least, but our participants. Today, we conducting a webinar on English. As we know that in today's century, it means the 21st century. Without English, we can't sustain in this world and we become a handicapped. So, those who are still hesitated how to improve English. So today this webinar for those students who have still hesitations about how to understand and how to speak English. And now I would like to invite our keynote speaker, Priya Shah. She is from Ahmedabad. Let's welcome Priya Shah, who is an honor and founder of Acumen. She holds a degree in teaching English, a foreign language, and has been mentoring students for international exams like IELTS, PTE, and OET for more than a decade. Teaching English to medical professions is her specialty. So today, she is here to discuss her journey from being a Gujarati medium student to a fluent English speaker as well as a trainer. Still, I have certain questions in my mind. Before I start this webinar, I would like ask few questions. What should we do for a good speaker on behalf of students? Where did you study? When did you start learning English? What is the important English proficiency? What device would you give to someone who wants to become a fluent English speaker? Or are there any free resources you would like to suggest? So there are certain questions in my mind on behalf of my students. I would like to hand over the sessions now to Priya Shah. Welcome, Priya Shah, and thank you so much for your immense presence in this webinar. Okay. Am I audible, Meha? Yes, you are clearly audible. Okay. Good afternoon, everyone. And I'm extremely proud to be able to join this webinar as a keynote speaker. And the only reason why I have agreed to do this webinar is I wanted to encourage everyone out there for improving their English. There is no magic to it. It's a journey. And the only thing that you need to improve your English is perseverance. There might be fallbacks. You might think that I still can't speak enough. I still can't write enough. I'm making a lot of mistakes in grammar.
But it's a journey. Like, it's okay if you are making certain mistakes, don't hesitate to make mistakes. That is how you learn. The only thing you need is you need someone to correct you whenever you're making a mistake. So if I share my journey of how I learned English, or how I improved my English, is only through the perseverance. Like, there were times when even I was not confident enough in speaking English. I used to hesitate a lot because when I entered in my high school, there were a lot of students who were studying English right from the beginning. So definitely they had a cutting edge over me. Like, I didn't have that many vocabulary with me. I was not well versed with the grammar, because only in the fifth standard we started learning English. That too, it was just one of the subjects. So right from the beginning, I couldn't get enough exposure to the language, and to the people who speak in English, or to the people who write in English. But when I completed my high school studies, and when I gave my 10th board exams, that's when I realized that this is high time I should do something concrete to improve my English. So the first thing I did was I joined a spoken English class. But that was not the only one class that I have joined. I did a series of spoken English classes after that, but realized that it wasn't helping me at all. The main issue with all the spoken English courses that we have right now is that they only teach you the grammar. Now, think about, how did you learn your native language? Like, you speak Gujarati fluently, you speak Hindi fluently. Did you learn the grammar of that first? No. As a child, you were able to get a lot of exposure. You kept listening to how people were speaking. You kept listening to how your family members and friends around you were speaking, and you picked up certain words, you picked up certain phrases, and you started speaking. Maybe it was only in fourth and fifth standard that you started learning grammar of Gujarati or Hindi. So the same goes with English. Do not focus too much on grammar. Of course, grammar is important, but imitation is the best way. Just like you imitated your family members while you were learning Gujarati or Hindi, the same thing you need to do. You need to imitate English speakers. Okay, it could be speakers from your own country, maybe your teachers, maybe your classmates who are good at English, or it could also be native speakers. And when I started learning English, about 15 years back, we didn't have enough resources. The only thing we had was reading newspaper, but you couldn't actually listen to people speaking in English. So what I used to do is the only place where I could find native English speakers speaking in English was the cricket commentary. And I liked watching cricket a lot. So that was my first exposure when I started learning to, listen to native speakers and identify how they are speaking. I started imitating them. And then gradually, as the internet came in, the resources increased. We started, getting exposure to Facebook. We started getting exposure to, different social networking website, and that is how I grew up. My proficiency in English increased. And today, like, if I fast forward to 10 years back, when I started teaching English to the native speaker, to the non-native speakers who are trying to improve their English just because they want to secure a good job, okay, or because they want to study in a university that is outside of India, that is in the native English speakers country. So that is how I started, teaching English. Now, what am I going to do today is, without explaining so much about how to improve your English, I'm going to share my screen and I'm going to give you a few websites which you can use to improve your English. And they are absolutely free. You don't need to pay anything for it. And they are self-paced. So it's not that you have to join the session on a particular time. They are completely video-based lectures. So you can view it whenever you want. You don't even have to subscribe to their channel. So to start with, the very, very authentic resource I would like to share is bbc.co.uk.
I'm sure all of you are very much familiar with this because it happens to be one of the most prestigious news, resource that all of us rely on a lot, like all over the country. So let me share my screen, and later on I will be also sharing these links with you, so that you can yourself do that. You can yourself join those links. Just a moment while I'm trying to share my screen. Is my screen visible to everyone? Not Priya, your screen is not visible. Okay, Just is it? wait. Okay, okay, Yeah. just wait. Yeah, your screen is visible, Priya, absolutely. Okay, thank you. Okay. So this is the link which I'll be sharing with you. But in case if you are not able to get the link, then you can remember the website. That's really easy to remember. It's bbc.co.uk. And once you enter into that website, you will need to go to Learning English. So it is very, very popular as BBC Learning English. So the version that I'm presenting right now is the web-based version, but I am quite aware that everyone does not have access to laptops or PCs. So the good news there is BBC Learning English also has a mobile application, and it is as useful as the website itself. Okay, so you guys, I'm sure you all are having mobile phone with you, so you'll be able to make some good use of your mobile phone by improving your English. So remember, the application is BBC Learning English. Okay. Now here, if you can see, you have different levels. The first one says English My Way. That is very basic one. So this is someone who is just entering in the high school, maybe in the eighth standard or ninth standard. For them, this is the right way to start. But if you are already someone who is pursuing graduation, then I would ideally suggest that you start with either lower intermediate or intermediate level. Now what happens if I click on intermediate level is the lectures, the series of lectures and videos pop up here. Okay, so first you go to features. I'm showing this once again. If you go to features, you will be able to see you have different levels. Okay, and if, as I said, if you are already pursuing your graduation or if you are about to complete your graduation, then the right level for you will be intermediate. Now the first one is, it says English at university. So this particular website has English resources for right from the kindergarten to those who are entering in the work. Okay, so there are wide range of activities and resources that you can use, and it is equally useful for both teachers and students. So I do encourage a lot of my colleagues also to use these resources to help their students improve their English. So if you are someone who is listening to this webinar as a teacher, I would strongly recommend you use this for your students.
And if you are someone who is, listening to this webinar as someone who is a house manager or someone who is pursuing graduation, then I would suggest to go first with English at university. If you click on this, it will give you a series of lectures, and these are all very interactive. Okay, so it is not like sun rises in the east or I cook food. What you learn in normal spoken English courses is you don't get authentic English. Now, authentic doesn't mean that the course is recognized by a certain university. Authentic means this is how the native speakers speak, or this is how the native speakers write. So, the best way for you to learn how native speakers speak or write is use these resources. Okay. Um, I before I move forward, Meha, I just wanted to confirm: should I be speaking in Hindi so that most Yeah, you can, Priya, no issues. yeah, so that most of the Yeah, attendees can be benefited from it, even those. definitely. Yeah, Sure. definitely. Okay, so I'm switching to Hindi now. So अगर आप ऐसे स्टेज पे हो कि जहाँ पर आपने जस्ट यूनिवर्सिटी में एंटर किया है या फिर आप जस्ट यूनिवर्सिटी कंप्लीट करने वाले हो एंड देन आप ये सोच रहे हो कि अगर मुझे जॉब करना है मुझे अपना इंग्लिश इम्प्रूव करना है तो मैं कैसे करूं, देन दिस इज द राइट स्टेप फॉर यू. अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको लेक्चर्स के नंबर दिए हुए हैं एंड देन यू कैन सी वैरायटी ऑफ टॉपिक्स हियर. से फॉर एग्जांपल आपको स्टडी स्किल्स सीखनी है, राइट? सो व्हाट यू डू बेसिकली इज you click on this lesson, okay, and you will see actually that there is a video, right? तो यहाँ पर ये जो है वो वीडियो है which plays. Now obviously all of these videos they are recorded by native speakers, तो आपको native speakers जैसा ही input यहाँ से मिलता है, right? It is just taking a while for video to start. ओके, सो यहाँ पर आपने जैसे देखा कि हर एक जो भी वो स्पीक कर रहे, whatever they are speaking, you can see that you have the transcript as well along with that, and that's very useful because when you are just starting to learn English, आपको सारे sounds को pick up करना difficult होता है. आपको ऐसा लगता है कि मैंने half of the sentences उनके समझे ही नहीं है. तो जैसे आप मूवीज में सबटाइटल्स को देखते हो वैसे ही यहाँ पर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट्स है which you can use.
Now, since I spoke about movies, why आई डोंट जनरली एनकरेज स्टूडेंट, मैं हमेशा कभी भी स्टूडेंट्स को ऐसी एडवाइस नहीं देती कि आप मूवी देख के अपना इंग्लिश इंप्रूव करो। उसका मेन रीजन ये है कि मूवी में बहुत सारी चीजें जो है वो जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन से कन्वे की जाती है, तो वहां पर आपको लैंग्वेज इनपुट बहुत कम मिलता है। और वैसा लैंग्वेज इनपुट तो बिल्कुल नहीं मिलता जिसको आप यूनिवर्सिटी पे या वर्क प्लेस पे यूज कर पाओ। जबकि आप कोई ऐसा कोर्स कर रहे हो तो आपको वर्क प्लेस पे यूज होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं द यहाँ पर जो लेडी है मेरी, शी वांट्स टू गिव हर सजेशंस, तो द अदर पर्सन इज सजेस्टिंग हिम, उसको सजेस्ट कर रहा है कि आप कैसे अपने सजेशंस ऐसे वे में दो ताकि आप बहुत रूड नहीं लगो, आप कैसे पोलाइट लगो, राइट। और अगर आप देखोगे तो ये सारे कोट मार्क में है। could I offer some suggestions, or from what I understand, or something that works for me is। तो ये सारे सेंटेंसेस और फ्रेजेस ऐसे हैं जिसको आप बार बार सुनोगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो याद रहने लग जाएगा। तो इसको बोलते हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, राइट। अभी तक आप कौन सा अप्रोच कर रहे हो कि आप पहले ग्रामर सीखते हो और आपको लगता है कि अगर मेरा ग्रामर परफेक्ट हो गया तो मैं फ्लुएंट हो जाऊंगा, बट दैट्स नॉट करेक्ट। सिर्फ ग्रामर परफेक्ट हो जाने से नहीं होगा, वो ग्रामर भी कैसा होना चाहिए कि जहां पर आप कोई बैकग्राउंड को लेके देख रहे हो। एंड दैट इज वाई ये वेबसाइट बेस्ट है, क्योंकि हर एक चीज के लिए एक बैकग्राउंड है। और फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फ्रेजेस वापस से लिखे गए हैं, लर्न फ्रेजेस यूज टू इंट्रोड्यूस अ सजेशन। तो 3 फ्रेजेस उन्होंने यूज किए, वो फ्रेजेस यहाँ पर लिस्ट किए गए हैं। फिर आपको उसी के साथ साथ में उन्होंने जो वोकैबुलरी यूज की, ओके, जैसे कि गाइडेंस, लेट मी गिव यू अ बिट ऑफ एडवाइस, सेज एडवाइस, तो ये सारी वोकैबुलरी थी जो उन्होंने यूज की। सिमिलरली यहाँ पर आपको पूरी ट्रांसक्रिप्ट वापस से अगर देखनी है, यू कैन सी दैट। सो दिस इज द कंप्लीट पैकेज। ओके, यूट्यूब पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो क्या होगा, सिर्फ वीडियो है, फिर फ्रेजेस सेंटेंसेस नहीं है आपके पास। जबकि ये रिसोर्स अगर अगर आप यूज कर रहे हो तो यू आर गेटिंग ऑल द रिसोर्सेस एट योर हैंड। और बस इसको ही आपको आगे आगे करते जाना है। दे हैव बीन नेम्ड, जैसे कि हमने अभी जो चैप्टर किया दैट इज 11th चैप्टर, तो वैसे ही जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाओगे वैसे वैसे आपका जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। एंड देन अगेन फिर उसके आगे का लेवल, जैसे कि यहाँ पर ड्रामा है, तो ये इंग्लिश जो है वो यूज होता है जो आप वेब सीरीज में सुनते हो, जो आप मूवीज में सुनते हो, दैट काइंड ऑफ इंग्लिश इट इज, right? So this was for those who are studying at the moment. Now what if you are working? Okay, then you have business English। कैसे आपके वर्क प्लेस पे कम्युनिकेट करना है, कैसे आपके बॉस के साथ कम्युनिकेट करना है, कैसे आपके कोलीग्स के साथ कम्युनिकेट करना है, कैसे प्रेजेंटेशन करना है। सो देन यू गेट योर इंग्लिश एट वर्क। अगेन वो इंटरमीडिएट लेवल है, उस पर आप क्लिक करो। इज अ सीरीज ऑफ वीडियोस दैट यू गेट। ओके, सो इसमें टोटल 66 वीडियोस हैं, एंड द सेम गोज फॉर दैट एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको टॉकिंग सेंस सीखना है कि कैसे आप फॉर्मल या इनफॉर्मल डिस्कशन करोगे अपने कलीग्स के साथ, देन यू हैव वन वीडियो ऑन दैट। द सेम वे it is also played, and this is very interesting, you know?
Okay. So as you just saw, these are not simply created for entertainment purpose. There are particularly certain verbs and phrases and idioms as well are used. और जहाँ जहाँ पर भी आप देखोगे उनको हाईलाइट किया गया है. कुछ ऐसे phrases हैं जिनको बार बार रिपीट किया गया है, जैसे कि could you please. Now that is the best way to make a humble request to someone. अगर वर्क प्लेस में आप किसी को बोलते हो give me your book, that sounds very rude, but could you please give me your book will sound like a very polite request. तो ये सारे बहुत thoughtfully डिजाइन किए गए हैं. ओके, इट्स नॉट कि सिर्फ एनिमेटेड वीडियोस बना दिए या सिर्फ कार्टून्स बना दिया, बट ऐसे बनाए गए हैं कि जो बहुत इंटरैक्टिव है. आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि आप अकेले अकेले स्टडी कर रहे हो, बिकॉज आप इतने स्टोरी में इन्वॉल्व हो जाते हो. अब क्या होगा, लाइक देयर इज सम सेंस ऑफ सस्पेंस एज वेल. और सारे जो फ्रेजेस है उसको वापस से यहाँ पर जो है वो स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया गया है. जैसे कि देयर आर सम रूमर्स गोइंग अराउंड, ओके, दैट आर नॉट ट्रू. प्लीज डोंट लिसन टू रूमर्स. नाउ अगर आप ये सारी बात सुनते हो तो ऑटोमेटिकली जब आफ्टर 6 और 7 मिनट्स का आप वीडियो सुनोगे तो 4-5 वर्ड्स तो इतने रिपीट हुए होंगे कि आपको याद रह जाएंगे, जैसे कि रूमर्स, राइट. तो बहुत बार क्या होता है कि हमें वो वर्ड का इंग्लिश मीनिंग पता होता है, पर हमारे ब्रेन का जो प्रोसेसर है वो स्लो चलता है. जब हमें जरूरी हो तभी वो वर्ड हमारे पास नहीं आता है. मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को सुना है कि मैम वर्ड्स के मीनिंग तो बहुत सारे आते हैं, पर मुझे जब जरूरत हो तब वो वर्ड क्यों नहीं आता मेरे मुंह पे. द ओनली रीजन इज कि आपको आपके ब्रेन को, अगर आपको उनके पास से फास्ट फास्ट काम लेना है तो आपको ज्यादा एक्सपोजर देना पड़ेगा, बार बार आपको वो सुनता रहना पड़ेगा, तभी जाके जो है वो आपका ब्रेन उसको फास्ट प्रोसेस कर पाएगा. ठीक है. सो ये इससे क्या होगा कि वन थिंग यू आर लर्निंग इज यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ लिसनिंग प्रैक्टिस. और ये जो एक्सेंट है वो भी नेटिव स्पीकर्स का एक्सेंट है, तो कोई भी नेटिव स्पीकर से आप बात करते टाइम पे भी उनको समझ पाओगे. और बार बार आप उनको रिपीट करोगे तो ऑटोमेटिकली कुछ वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो है वो आपको याद रह जाएंगे. और सारे जो लेक्चर्स हैं उनके साथ साथ में ट्रांसक्रिप्ट भी है. नाउ ऑब्वियसली मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि सिर्फ वीडियो देखने से या सुनने से आपका इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगा. ऑफ कोर्स आपको ग्रामर भी सीखना है, बट सिर्फ ग्रामर सीखने से नहीं होगा, राइट.
सो हियर यू ऑल्सो हैव सम रिसोर्सेज फॉर ग्रामर, जैसे कि आपको लगा कि हाँ मुझे कुछ वर्ड्स अब आ रहे हैं पर मुझे अब ये नहीं समझ में आता कि ये सेंटेंस कैसे बना या फिर मैं ये सेंटेंस कैसे बनाऊं, देन यू गो टू द ग्रामर सेक्शन। अब यहाँ पर भी आपको बेसिक लेवल है, इंटरमीडिएट लेवल है, इंटरमीडिएट प्लस लेवल है, ओके, रेफरेंस है। तो बेसिक से स्टार्ट करो। अगर आपको लगता है कि आपको बिल्कुल ही ग्रामर के प्रिंसिपल्स नहीं पता है तो बेसिक से स्टार्ट करो एंड देन यू मूव ऑन। जैसे कि लेट अस डू विद द इंटरमीडिएट। अगर मैं इंटरमीडिएट पे क्लिक करती हूँ, देन यहाँ पर 6 मिनट ग्रामर। अब यहाँ पर भी बहुत सारे वीडियोस है जिसको मैं देख सकती हूँ। अब ये वीडियोस जो है वो थीम को लेकर नहीं बनाए गए हैं पर ग्रामर को लेकर बनाए गए हैं। जैसे कि मुझे ये सीखना है हाउ टू यूज प्रेजेंट टेंसेस। तो प्रेजेंट टेंसेस पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर सेशंस है, जैसे कि एक्टिविटी 1, ये प्रेजेंट टेंस है, ओके। अब यहाँ पर भी आपके पास वीडियो है। अब ये वीडियो में स्पेसिफिकली सारे सेंटेंसेस जो है वो प्रेजेंट टेंस यूज करके बनाए गए हैं। उसके साथ साथ में आपको यहाँ पर थ्योरी भी दिया है कि कब आप प्रेजेंट सिंपल यूज करते हो। जैसे यहाँ पर लिखा है यू यूज इट फॉर फैक्ट्स, हैबिट्स, ट्रूथ्स एंड परमानेंट सिचुएशंस। फिर आप कैसे सेंटेंस बनाते हो, यू एड एस और ईएस आफ्टर द वर्ब। क्वेश्चन बनाना है तो डू और डज ऐड करते हो। तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि आई चेक माई ईमेल बट यू की वर्क्स। तो आई और यू है तो यू डोंट एड एस ईएस, राइट? एंड इफ इट इज अनदर पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट देन यू एड इट। आफ्टर दैट अगर आपने ये सारी थ्योरी पढ़ ली एंड देन इफ यू वांट टू चेक इफ you know how much have I understood, let me check if I have got it right, then you have some activities to do, okay? तो उसके बाद आप जो है वो activities करोगे। Okay, now here it says session 1 and 3 activities, so you click on that। Again, for checking your language you don't need a teacher, you can do it yourself, okay? जैसे यहाँ पर है ये आपके पास एक्टिविटी, आपने उस पर क्लिक किया। देन एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, वैसे ही सारी एक्टिविटीज आती जाएंगी एंड देर आर सम फिल इन द गैप्स क्वेश्चंस जो आप कंप्लीट कर सकते हो। देन देर आर Q&A जो आप कंप्लीट कर सकते हो। देर आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस व्हिच यू कैन डू एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट एंड द बेस्ट पार्ट हियर इज दैट आपको वो करेक्शन भी किसी के पास से करवाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो ये सारे एक्टिविटीज है उसके साथ साथ में ही आपको करेक्ट आंसर भी दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर है क्वेश्चन 1 to 7, ओके। अब क्वेश्चन 1 to 7 को आपने आंसर कर दिया, देन यू कैन चेक योर आंसर। इफ यू चेक योर आंसर इट विल टेल यू वेदर योर आंसर इज राइट और रॉन्ग, और अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो करेक्ट आंसर क्या है वो भी आप देख सकते हो। राइट नाउ बिकॉज जस्ट अ ब्राउजर इज अ लिटिल स्लो, ये एक्टिविटीज लोड नहीं हो रही है, इट इज टेकिंग अ व्हाइल। राइट, अदरवाइज ऑल ऑफ दीज आर ऑल्सो फ्री रिसोर्सेज। यहाँ पर भी कोई एक्टिविटी के लिए सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। बहुत सारी अदर चैनल्स आप अगर देखोगे तो उसमें क्या होगा कि आपके लिए कुछ रिसोर्सेज जो है वो फ्री है, पर जहाँ पर आपको सही में हेल्प की जरूरत है, जैसे कि आपको करेक्शंस के लिए हेल्प की जरूरत है
तो वहां पर आपको फ्री रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, जबकि बीबीसी लर्निंग इंग्लिश एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको करेक्शंस के लिए भी जरूरत नहीं है टीचर्स की, आप अपने आप को सारी एक्टिविटीज कर सकते हो, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. Okay, now another resource I'm going to share is eslfast.com. Um, this is also an authentic source of learning English. Here also you have the levels, जैसे कि for beginners, okay? Beginners is जो सबसे पहले start कर रहे हैं. Then you have level 1, level 2, level 3, level 4. तो जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे आपको लगेगा कि हाँ अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज भी कर सकता हूँ. इफ यू फील कॉन्फिडेंट इनफ टू डू इट, यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. फिर इसके बाद है फॉर इंटरमीडिएट लर्नर्स. सो यू विल बी एबल टू आल्सो सी द इंटरमीडिएट लर्नर्स activities and phrases. Okay? Then you have some essay writing here. So I have got to know from your teachers that you are also interested in knowing about exams like IELTS, PTE, and TOEFL, which students who want to work abroad would like to, join, and they would like to take the test and move to the university. So for that also, if you are aware about those exams, like if you take IELTS, PT, or TOEFL, all of those exams basically test four skills: listening, reading, writing, and speaking. तो अगर आप ये सारी एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये फ्री रिसोर्सेज जो है वो बहुत यूजफुल हो सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर आपको है स्पीक इंग्लिश फास्ट. नाउ इफ यू क्लिक ऑन दैट, अगर आप इस पे क्लिक करो, देयर विल बी रेंज ऑफ टॉपिक्स. अगर आप में से किसी ने पहले आइल्स या पीटी ट्राई किया है तो आपको पता होगा कि उसमें मेनली आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करनी होती है. तो यहाँ पर जैसे कि कॉलेज लाइफ के बारे में आप कैसे बात करोगे, यू क्लिक ऑन दैट. अगेन यहाँ पर इंटरैक्टिव है. यू व्हाट काइंड ऑफ डिस्कशन यू वांट टू हैव. आपको क्लास नोट्स बोरो करना है, टेक्स्ट बुक्स बाय करना है, आपको होमवर्क के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, अगर आपको प्रोफेसर से बात करना है, अगर आपको स्कूल लीव करना है फॉर एग्जाम्पल, तो कैसे बात करोगे आप. तो अगेन ये डायरेक्टली ऐसा अप्रोच है जहां पर हर एक सिचुएशन को लेके आपको सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस दिए गए हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लर्न कर रहे हो कि प्रेजेंट टेंस में कैसे सेंटेंस बनाते हैं. बिकॉज आप जब नई लैंग्वेज लर्न कर रहे हो तो आपको थॉट्स भी चाहिए, आपको न्यू वर्ड्स भी चाहिए. तो सिर्फ इतना पता होना कि मुझे वर्ब के पीछे एस और यस लगाना है इज नॉट इनफ, राइट. आपको एक्चुअली पता होना चाहिए कि नेटिव स्पीकर्स कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्लिक ऑन दैट. हाँ, अगर देखो अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया है. अब यहाँ पर आपको वीडियोस नहीं है, बट यू हैव शॉर्ट ऑडियोस. ओके, सो यू कैन सी हियर अगेन यू हैव द ऑडियो as well as the transcript. Right? So you get the audio और साथ साथ में आपको उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी है. तो बिगिनर्स के लिए दैट इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज आपको अगर नए वर्ड्स के साउंड्स नहीं पता है तो आप पढ़ के भी उनको समझ सकते हो. एंड देन देयर इज अ ह्यूज ह्यूज वैरायटी, बहुत सारे जो है इसमें वैरायटी दिए गए हैं. देन आई वाज स्पीकिंग अबाउट द राइटिंग. तो अगर राइटिंग टेस्ट आपको करना है, ओके, तो नॉर्मली आइल्स या पीटी में क्या होता है, आपको ऐसे लिखना होता है. एंड व्हाट आर द ऐसे राइटिंग्स अबाउट, आपको डिफरेंट डिफरेंट सोशल टॉपिक्स पे ऐसे राइटिंग करना होता है. सो हियर यू गेट दैट टू. अगर आप देखोगे तो ये वेबसाइट पे अबाउट 365 ऐसे राइटिंग्स आर गिवन. तो ये आपकी रीडिंग भी प्रैक्टिस हो गई एंड राइटिंग भी हो गई. जैसे कि थैंक्स गिविंग,
That's we celebrated it about a month ago. So here you get what is Thanksgiving, how is it celebrated. Okay, and again the best part here is कभी कभी क्या होता है कि कोई वर्ड ने आप कोई वर्ड को आपने पढ़ के सीखा होता है, then you don't know how to pronounce it. Okay? And sometimes if you have listened to it and you have learned that word, तो आपको ये नहीं पता उसको स्पेल कैसे करना है. तो ये जो वेबसाइट है उसकी बेस्ट चीज यही है कि आपको दोनों ही वर्जन मिलते हैं. ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक शॉर्ट पैराग्राफ, और अगर आप इसको प्ले करोगे, okay, so you can also learn pronunciation through this. And then you have the entire essay on it. And then you have vocabulary. यहाँ पर सारे quiz है फिर आपको. Comprehension उसी के बेस पर, dictation उसी के बेस पर. जैसे कि हम vocabulary पे क्लिक करें. तो थैंक्सगिविंग को लेकर कौन कौन सी वोकैबलरी यूज हुई थी, जैसे कि अराइवल है, बलून है, कार्टून है, क्रैनबेरी है. तो जितने भी वर्ड्स इसमें यूज हुए थे, दे आर ऑल लिस्टेड हियर. एंड यू गेट इट्स मीनिंग, जैसे कि स्टफिंग. So you first get the dictionary here. So this is how all of these resources, can be used. These are the two best websites which I would recommend. One is BBC Learning English, and as I show you, there are a lot of different courses, and you actually need only one thing, and that's motivation to improve your English. And another is eslfast.com. And this, all these websites also have their Facebook and Instagram pages. Now I'm sure that you all have been using it. आप सबके पास आपका Facebook और Instagram account होगा. तो जोक्स की पेजेस को सब्सक्राइब करने के बदले या कोट्स के पेजेस को सब्सक्राइब करने के बदले ऐसे पेजेस को सब्सक्राइब करो जो आपको इंग्लिश का इनपुट देते हो. तो बीबीसी लर्निंग इंग्लिश जो है उसका खुद का एक फेसबुक पेज है, उसका इंस्टाग्राम पेज है, और उस पे वो क्या करते हैं, एकदम शॉर्ट जो है वो वीडियोस पोस्ट करते हैं, जैसे 1 मिनट वीडियो ऑन अ डिफरेंट टॉपिक. जैसे कि अगर आपको फेसबुक पे किसी के फोटो पे कमेंट करना हो, तो एवरी टाइम आपके पास एक ही वर्ड रहता है, नाइस, राइट. देयर आर डिफरेंट वर्ड्स दैट यू कैन यूज. सिमिलरली आपको किसी को बर्थडे विश करना हो, तो आपके पास एक ही वर्ड है, हैप्पी बर्थडे या मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. बट देयर आर अदर वेज टू एक्सप्रेस योरसेल्फ. तो सोशल मीडिया यूज करना भी गलत नहीं है, बट ऐसे यूज करो कि जिससे आपकी डेवलपमेंट में उसको वो बेनिफिशियल हो. तो आई होप आज के वेबिनार को सुनने के बाद एक चीज आप सब डेफिनेटली करोगे, एंड दैट इज टू सब्सक्राइब टू पेजेस व्हिच हेल्प यू इम्प्रूव इंग्लिश. टू ऑफ देम आई वुड सजेस्ट. एक जैसे मैंने अभी आपको बताया, बीबीसी लर्निंग इंग्लिश, एंड द अदर वन इज टू फ्लुएंसी, दैट इज TOFLUENCY. दीज आर टू बेस्ट चैनल्स, और इसके तीनों जगह पर आपको पेजेस मिल जाएंगे. दे हैव यूट्यूब चैनल, they have Instagram page, and they have Facebook page as well. So this is how you will be able to improve your English, not just by joining a spoken English course, because वहां पर आपको या तो फिर सिर्फ ग्रामर सीखने मिलेगा या तो फिर सिर्फ स्पीकिंग सीखने मिलेगा, पर ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो आप नहीं कर पाओगे. So I think that's all I had to say, Meha. Over to you now. Thank you so much. Just wait. Thank you so much. Can you repeat the channel name? I was just wondering if I can type here that everybody can see. No, no, no. You can just type in personally, but can you speak more about the channel? How could you use or something? Sure. Yeah. Yeah, thank you.
Okay, so I have sent both the websites to you, Meha, and I just couldn't get your second question. Would you please repeat it for me? How could we use this channel? ओके या सो आपको सिर्फ एक ही चीज करना है, आपको उनके पेज को फॉलो करना है। जैसे कि आप बहुत सारे पेजेस को ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, जो आपके सिटी की कम्युनिटी होगी, या फिर आपके स्कूल्स की कम्युनिटी होगी, या फिर आपके टीचर्स की कोई कम्युनिटी होगी। तो वैसे ही ये भी है जो पेजेस उनके खुद के इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रोफाइल है। तो आपको इतना ही करना है, आपके फेसबुक प्रोफाइल में जाकर टाइप करना है बीबीसी लर्निंग इंग्लिश फेसबुक पेज, आपको मिल जाएगा उसमें। और फिर आपको वो पेज को फॉलो करना है। जैसे कि आप वो पेज को फॉलो करोगे, उनकी हर रोज की अपडेट आपको मिलती जाएगी। एंड इन अ डे दे एटलीस्ट हैव 8 to 10 पोस्ट। तो एक ही दिन में आपको इतना सारा इनपुट मिल रहा है। तो जैसे भी आप स्क्रॉल कर रहे हो, तो स्क्रॉल करते करते भी 2-3 नए फ्रेजेस या वर्ड्स आप सीख जाओगे। इट इज दैट इजी। और आपको कुछ भी नहीं करना, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू फॉलो देयर पेज। तो ऑटोमेटिकली आपके न्यूज फीड में वो उनके पोस्ट आते जाएंगे। Okay, Meha, is there anything else that you wanted to Yeah, ask? definitely understand. We can use FB pages, and through these two channels, we can learn that things. Yeah, Yeah, it's these are very just, easy. two of many. There are so many of them, but I Yeah. find these two very authentic ones. So I suggest this. Okay, and there is another, Miss. You have suggested two resources: bbc.co.uk and eslfast.com. Any other Yeah. websites or something which we can use for free resources for developing our English? There is TED Talk that you can Okay, definitely TED Talk. use. Okay, TED good. Talks. Yeah. So I think this both are for the those who are interested from the basic. I think it Yes. is very easy to understand them. I think Uh, so. देर आर लेवल्स। सो अगर जो बिगिनर्स है वो बिगिनर्स वाले कोर्स पहले करे, फिर इंटरमीडिएट वाले करे, और फिर एडवांस वाले करे। सो देर इज समथिंग फॉर एवरीवन। बिगिनर्स के लिए भी एक्टिविटीज है, ये वेबसाइट्स ऐसी हैं कि जिनमें बिगिनर्स के लिए भी एक्टिविटीज है, इंटरमीडिएट के लिए भी है, और जो एडवांस लेवल पे है फिर भी सोच रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा इम्प्रूव और करना है, उनके लिए भी है। सो देर इज नो लिमिटेशन एज टू हु कैन यूज दिस, एवरीवन कैन यूज इट। Yeah, definitely. This is more interesting information and knowledge about how to improve English from free resources. This is really in this modernization. This is a really new technique to understand English. Yeah, Thank you very much, and Meha, for inviting me. yeah, just wait, Priya. I invite my ma'am, Rinku ma'am. Rinku ma'am, Rinku ma'am. Yes, Meha. Yeah, ma'am, please. So, Meha, on behalf of TIC, on behalf of TIC, I would like to thank our management and principal for motivating us for conducting this webinar, and especially obliged to our eminent speaker who is exemplary. It is said, preach what you practice. She is perfect example of it. The way you spoke, Priya ma'am, nobody can judge that you are from Gujarati medium. It is your hard work and perseverance that you are today an eminent speaker. So, viewers, I think today you are acquainted the way you can learn English. It was very fruitful session, Priya ma'am. Thank you, ma'am. It's my pleasure, and I'm always ready to help anyone who wants to improve their English in whatever way I can. So I'm really glad that I was given this opportunity. So thank you very much, Rinku ma'am, and the whole management for giving this opportunity.
Thank you so much, Priya. Once again, I'm really thankful to you for giving me this patience as a chairperson. And if our students have any kind of queries and anything, I will letter to you give to that things. Sure, Yeah, yeah, definitely. definitely. And once again, thank you so much for this Okay. fruitful session. Bye, Chalo, have a everyone. nice